English diary present anger expression. How can we express anger? If you are in anger or if you want to express your anger to someone, how could you express? So there are 30 expression through which you can show your anger. So now look at these. मुझे आपसे डर नहीं लगता. I am not afraid of you. बस बहुत हो चुका. Enough is enough. चाहे जो भी हो, whatever happens. मैं आपको जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगी. I will kill you. I will not leave you alive. I will not leave you alive. एक लफ्ज़ और कहा तो बहुत पछताओगे. Your single word make you repent. मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा, सिखाऊंगी. I will teach him her a lesson. दफ़ा हो जाओ. Go away. Get lost. Go away from my eyesight. आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना. Don't show your face again. Don't show your face again to me. तुम अभी मुझे जानते नहीं हो. You don't know me completely. हिम्मत है तो करके दिखाओ. Show me your courage. Show dare to do this. तुम बहुत पछताओगे. You will regret or repent so much. तुम गलत बंदे से उलझ रहे हो. You are messing with the wrong person. तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो. How can you cheat me? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? How could you do this to me? तुम खुद को समझते क्या हो? What do you think of yourself? तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? What do you mean for this? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? How dare you do that? ये तुम्हारा मसला नहीं है. It's not your issue. It's none of your business. मैं तुम्हारी ग़ुलाम नहीं हूँ. I'm not your slave. तुमने मुझे ख़रीदा हुआ नहीं है. You haven't reserved me for yourself. मैं अपनी बर्दाश्त खो चुकी हूँ. I have lost my temper. मैं गुस्से में बेकाबू हो जाती हूँ. I lost myself in anger. बहुत हो चुका. अब देखो क्या होता है. It's enough. Now see what happens. वो गुस्से में पागल हो चुका था. He became crazy, senseless in anger. मेरा दिमाग ख़राब मत करो. Don't spoil my mind. Don't mess up with my mind. अपनी औकात में रहो. Stay within your limits. अपनी ज़बान को लगाम दो. Control your tongue. आखिर तुम्हें किस चीज़ ने पागल कर दिया है? What made you crazy after all? मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाओ. Don't involve my family in this matter, in this issue. इसका अंजाम बहुत बुरा होगा. The consequences will be unbearable, unrecoverable. So these are anger expression. If you are angry with someone, if you are in anger, so you can express your anger through these sentences, through these expression. Thanks for watching.